Right. So direct questions we are doing today, writing task 2. Direct questions are those type of questions which are generally asked to whereby you have to give your clear opinion. Okay. You have to give your clear opinion in these type of questions in writing task 2. So direct questions. Now we know we have agree, disagree, problem solution, cause effect, discuss both views, right? Advantage, disadvantages, and miscellaneous topics. Miscellaneous topics are those in which you are being asked whether it is a positive or negative development or such kind of direct questions. Direct questions means that examiner is only asking your clear opinion. Over here, maybe you get some kind of topic in which you don't have to present an argument. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੀਪੀ ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, so you are just going to explain that for in first BP this is how it is going to help, second BP also furthermore starting with, right? This is how it is going to help. Now let's look at the direct question. Right, so direct questions, let's begin. Now, what are these questions? Direct questions are generally asked to GT aspirants of IELTS who are undertaking GT test. However, academic students have got such topics as well. These topics are opinion based and ask you to answer directly according to the topic. It is important to give your opinion in the introduction only to gain 0.5 band extra. Yes, 0.5 band extra in your task 2, since you boost your task response achievement, cohesion and coherence scores with this. Now task response के अंदर क्या होता है, तो थर्ड जो कैटेगरी होती है टास्क रिस्पॉन्स की, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम है, इस अंदर जेडी थोड़े मार्किंग होगी वो 9 स्कोर होता है, टोटल 9 out of 9 which is divided into 3 sub categories. ठीक है, 3 3 3। ਹੁਣ ਉਸੇ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। तो डिमांड का जवाब देना मतलब यू आर गिविंग योर क्लियर ओपिनियन व्हाटएवर इज बेसिकली, चाहे वो प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫॉलोड ਬਾय ਸਜੈਸਟਿੰਗ ਸਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, दिस ऐसे विल डिस्कस सम बेनिफिट्स फॉलोड बाय सम ड्रॉबैक्स। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ। सिमिलरली ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। तो टास्क अचीवमेंट ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਹੀਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ। ਲੌਜਿਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, तो एग्जामिनर ਨੂੰ क्लियरली ऑलरेडी पता चल गया कि ये बच्चे ने नीचे इंफॉर्मेशन क्या डिस्कस करनी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਵਧਾਇਆ 3 ਹੋਰ। ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਹੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾमिनर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ठीक है, लॉजिकल रिस्पॉन्स जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया कि वो 3 डिफरेंट आइडियाज आ गए, वो लॉजिकली भी ਤੁਸੀਂ डेवलप कर पाए। ठीक है, डू नॉट गिव योर ओपिनियन इन डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे। ओ क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड होती है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, मतलब कि तुमने अपना ओपिनियन बाद देना है, पहले नहीं देना। ठीक है, नाउ टॉपिक टू डिस्कस फॉर टुडे इन द क्लास इज मेनी पेरेंट्स। अपने को ए टॉपिक है, ठीक है, many parents today organize extra classes for their children after school and at the weekends. Do you feel that this is worthwhile? क्या ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये चीज अच्छी है? ठीक है, and or do you feel children have enough education at school? Okay, so ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये चीज अच्छी प्रैक्टिस है जो पेरेंट्स ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾसेस ਯਾਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ, ठीक है, क्या वो चीज अच्छी है? क्या ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है वो चीज अच्छी है प्रैक्टिस?
या तो लगता है कि जड़ी एजुकेशन बच्चे स्कूल अंदर ले रहे हैं वही सफिशिएंट है। Okay, now as you can see, this is a direct opinion based topic where we are asked to compare two statements which are asked. ठीक है, do you feel means क्या तुम्हें लगता है तो उसे क्या जवाब है ਤੁਹਾਡਾ yes, हाँ जी, अच्छी प्रैक्टिस है, या ना जी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो yes है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ओपिनियन आ गया थोड़ा। So we will discuss why it will be worthwhile, how it can affect children. Affect a तो जो भी शुरू होता है it means negative आ गया, ठीक है। तो अपने को यही दोनों चीजें पहुंचती हैं, ए नाले मेरा ओपिनियन भी इथे डिस्क्राइब करेगा। चलो, स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव एसे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਹੈਬਿਟ ਫਰਮ ਨਾਓ ਔਨ। always do planning. Why? Because if you plan your essay, obviously you know what you're going to write. If you don't plan your essay, what would happen? You end up going in different ideas, and when would you get derailed from your topic? You won't even come to know, which means ज्यादा कुछ नहीं होएगा, ज्यादा कुछ नहीं होएगा, बैंड ही गिरेगा। Okay, so planning needs to be done. Then structure, you need to decide, okay, the structure, how many paragraphs and what information in which paragraph. Then you need to write up vocabulary, whatever words, expressions you can think of. Then you need to think of the grammatical structures as well to use in essay. Linkers also, you should be knowing that what kind of linkers you need to use. Whether in this statement I can bring up those expressions that we did in the class, irrefutable, incontrovertible, right, refute and all that stuff. And you need to know the examples also, that what kind of examples you need to write. Yes, in each paragraph you need to write an example, because see, it's pretty common sense when you are suggesting something or when you're writing something. How are you writing? How do you know it? Do you have any support? Do you have any evidence? That is why we are bound to give examples here, and it contributes to a well-developed response. You must write examples to support your point. That is known as developed response. Okay? Right. Planning. Now let's do planning. How I did planning. So benefits of taking extra classes. What do you think? What are the benefits? First of all, students, they get one-to-one classes, right? When you are sitting in your class, how many students you come across? 20, 25, 30 students, maybe more. Okay, but at least a minimum of 20, 30 students in the school, right? Now, do you think every single child gets a proper attention from the teachers? It's not easy. It's not something that they are going to take that one lecture for rest of the day at school. Correct? So which means that in that particular hour, okay, getting or paying attention for the teacher to each and every child is not possible. So in extra classes, they can get that kind of opportunity where teachers can teach them one-to-one. Teacher can pay even more attention. That is also, we know, right? So why it will be worthwhile, that is what we are discussing. Teachers can pay more attention to make child understand in depth. So teachers can provide them in-depth knowledge about the lesson that they have taught in class. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ मैंने इस अंदर यही लिखे कि रिवाइज द लेसन्स टॉट इन स्कूल बाय द टीचर कैन हेल्प। वो करेगी कि रिवाइज करके होएगा क्या, कैन हेल्प टू एनहांस द रिटेनिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। मतलब कि टेस्ट्स विच वही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। फिर टीच स्टूडेंट्स टू द ग्रुप, ठीक है। ਹੁਣ ग्रुप स्टडी ਲਈ ਵੀ अच्छा रहेगा हर एक ਲਈ। ऑब्वियसली अगर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 30 स्टूडेंट्स हो, अगर उसे का ट्यूशन दोगे तो टीचर्स इतने बच्चे रखते नहीं, ट्यूशंस लिए कितने होंगे वक्त 5 6, वो भी ग्रुप स्टडी होगी, ये भी ज्यादा इफेक्टिव है। किस लिए? टीम स्पिरिट लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन होगी।
and obviously tasks can be understood better and problem specific. मतलब बच्चे दी कोई भी प्रॉब्लम होएगी, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होएगी, टीचर्स उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, तो जिस बेस पे बच्चा इजीली हर एक चीज समझ सकता है. अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Right. Now, how it can affect and put burden. So, my dear Ashri, first of all here, keep in mind the spelling of burden. Everybody, you have a tendency, Yes, or most of you, to write O-N. It's not O-N, it's E-N always. Okay, B-U-R-D-E-N. Now, first and foremost point is, not every child requires special attention. Why not? Do you think that every single child who is studying in the class is actually deprived of studies? No. Some students are really intelligent. So do you think they need the time for tuition? No, they don't. They can easily grasp the things. So we cannot make it as a mandatory. Okay. Why? Now, let's say, for example, if you are, let's say if you are really studious and you're intelligent, so if your parents would force you to go for tuition, what would happen to you? No, I don't need to. No, you have to go, you have to. What would happen? Obviously, you would start losing your interest. Yes, sir. Because your interest may be lying elsewhere, because you know that you can study effectively, you can retain things, so what else you want? You're standing already first in the class, so what else you want? Yes. There's nothing on top of standing first. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਆਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So not every child requires special attention. Second, child may become uncomfortable because of this, right? Lose interest in studies altogether. Yes, because some learners want games instead of studies. कुछ बच्चे दा जड़ा इंटरेस्ट है वो गेम्स से भी होता है बजाय कि स्टडीज से, right? And recreational activities help to improve certain life skills. कुछ लाइफ स्किल्स होंदी है ਜਿਹੜੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਸ ਖੇਲੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਗੇਮਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿੰਦਰ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਸ ਜਿੰਦਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਸ ਜਿੰਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ stand up करके you will be really confident speaker or something. ਤੁਹਾਨੂੰ recreational activity ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Now that involves everything. No, it's not about the games only, other activities as well. ठीक है ना? तो इस करके कोई ट्यूशन ਦਾ इतना ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ benefits ਵੀ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ पेरेंट्स ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ opinion, right? चलो, structure of essay. So now that we have discussed structure of essay, introduction अंदर sentences कौन सी आएंगी? 2 sentences आएंगी थोड़ी, 2 या 3, इस तो ज्यादा नहीं. और कौन सी? Paraphrase the topic plus give your opinion. ठीक है? उस तो बाद BP1 आ गया, benefits of sending students for tuition, drawbacks of sending them for tuition, and in conclusion finally restate BP1, BP2, your body paragraph 1, body paragraph 2, and restate opinion as well along with the suggestion. Suggestion क्या हो गया? थोड़ा opinion. तुसी अपना opinion पहले देता ही है कि beneficial है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ beneficial ਆਪਾਂ opinion ਦਵਾਂਗੇ, लेकिन वो किवे है, अपना suggestion की है, वो ਆਪਾਂ conclusion ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ. Okay? So let's begin with vocabulary. First of all, syllabus. What else we can say to syllabus? Curriculum. If you need to write syllabi, you can even write curricula. उसमें curricula. Okay. So syllabi का बन जाएगा curricula. ठीक है? Motivate नु आपा encourage कह सकते हैं. Extra classes नु आपा जेडी नु आपा extra classes दी गल कीती है tuition दी, extra नु आपा supplementary classes भी कह सकते हैं. ठीक है? प्रेशर नु आपा बर्डन ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया. ट्रू फैक्ट, इट इज irrefutable. ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक ग्रोथ ओवरऑल बच्चे दी. ठीक है? अगर थोड़ी कोई तुसी चीज लिख दे रिगार्डिंग मेंटल एबिलिटीज तो वो थोड़ी बन जाएगी कॉग्निटिव.
ओके, मेंटल एबिलिटीज थोड़ी बन जाएगी कॉग्निटिव एबिलिटीज। अगर ओवरऑल लिख रहे हो तो होलिस्टिक ग्रोथ होगी थोड़ी। ओके, क्लियर एवरीवन? जी सर। So let's begin with intro. उन टॉपिक पहले देखिए, many parents today organize extra classes. उन पेरेंट्स नो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ वर्ड किया ਸੀ, कौन सा वर्ड किया था? Progenitors. Yes, progenitors. Okay, so many parents today organize extra classes for their children after school and at the weekends. Do you feel that this is worthwhile thing to do, or do you feel children have enough education at school? ठीक है, हुन तुसी इस अंदर देखो मैं क्यों क्या है कि पहला पैराग्राफ बेनिफिट्स, सेकंड पैराग्राफ ड्रॉबैक्स। मैं क्यों क्या है क्योंकि मैं अपने हिसाब तो नहीं टॉपिक ले रहा, मैं टॉपिक दी डिमांड तो ले रहा हूं। इथे लिखे हुए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट दिस इज वर्थवाइल थिंग टू डू, अगर है तो क्यों है, ठीक है, और डू यू फील चिल्ड्रन हैव एनफ एजुकेशन एट स्कूल, व्हिच मींस कि वर्थवाइल नहीं है तो क्यों नहीं है। आप इन दोनों का जवाब दे देना है, ठीक है, उस तो बाद असी फिर दसांगे कि हाँ जी है या नहीं है, तो क्यों है क्यों नहीं है। आप पहले ओपिनियन में देखो, चलो। इट इज इनकॉन्ट्रोवर्टिबली ट्रू। इनकॉन्ट्रोवर्टिबली का मतलब, कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? Without any contradict. यस, कंट्रोवर्सी मतलब कि ये आर्गुमेंट है। हुन इथे कह रहे हैं कि भाई अंदर कोई आर्गुमेंट ही नहीं हो सकता, यानी कोई चीज बिल्कुल सच्ची है, फैक्ट है। So it is incontrovertibly true that over the past few years, people have become used to the idea of extra classes. ठीक है, people have become used to आप दो जगह यूज करते हैं, एक तो हो गया past comparison, एक हो गया obsessed। लोग की obsessed हो गए किस दिन? People have become obsessed with the idea of extra classes, या people Sir, obsessed meaning? glued, जुड़ गए हैं इस चीज से ना। Okay. For example, if I say that Arshdeep is obsessed of her mobile phone, सारा टाइम मोबाइल फोन पे लगी रहती है। Okay, sir. Right, so people have become used to the idea of extra classes. Nonetheless, the effectiveness of this practice is a matter of debate. ठीक है, कि पावे ये चीज अपनी, although the effectiveness of this practice is a matter of debate, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ effectiveness है, ठीक है, इस प्रैक्टिस ਦੀ वो मैटर हैगा बेसिकली डिबेट दा, ठीक है। वो आपा क्यों लिखता, डू यू फील दिस इज वर्थवाइल थिंग, और डू यू फील दैट इट्स एजुकेशन एट स्कूल इज एनफ। व्हाइल सम assert, हुन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्या सी या तो व्हाइल या ऑल्दो, आपा ऑल्दो जगह नॉनदलेस ऑलरेडी लगा चुके हैं। सो व्हाइल सम assert, व्हाइल सम assert मतलब व्हाइल कुछ लोग ये सोच रखते हैं, assert मतलब ओपिनियन, थोड़ा अपना ओपिनियन, ठीक है। हुन लोकी ओपिनियन लेके चलते हैं, while some assert that it puts a burden on students life, भावे कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये कुछ बच्चों ते, ठीक है, ये बच्चों के ऊपर बर्डन, ठीक है, प्रेशर, उन्होंने जिंदगी के ऊपर प्रेशर बना के रख दी है। आई थिंक, मैनू लगता है that these classes can be highly beneficial। हुन तुसी दोनों साइड तक जा नहीं सकते, तुसी एक साइड ते लोकां नू भेज दो, एक साइड ते लोकां दा ओपिनियन बना के दस दो, दूसरे साइड ते अपना दस दो। हुन मैं देखो सेकंड वाला कह रहा है, डू यू फील और डू यू फील दैट चिल्ड्रन हैव एनफ एजुकेशन एट स्कूल। मैं कह रहा ठीक है, कुछ लोग की कहते हैं कि हाँ जी ये बर्डन बच्चों पर पांदी है, पर मैनू लगता है दैट दीज क्लासेस आर हाईली बेनिफिशियल। ये तुम्हारा ओपिनियन तुमने क्लियर करता। ओके, क्लियर? जी सर। All right, so let's move on to BP1. So body paragraph 1 is in the guys, देखो लिखन ਲਈ हमेशा रखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ linkers connectors use करने ही हैं, ठीक है। वो ਆਪਾਂ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि because they act as directives, ताकि रीडर ਨੂੰ, कोई भी रीडर है, चाहे ਤੁਸੀਂ IELTS अंदर ऐसे लिख रहे हो या ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ यूनिवर्सिटी जाओगे ਉੱਥੇ अपनी थीसिस लिखोगे, तो you are indirectly letting the reader know that what particular this paragraph is dedicated to।
ठीक है ना, तो देखो टू बिगिन विद यानी ਆਪਾਂ ਹੁਣ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो टू बिगिन विद एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है, आर मोर पर्सनलाइज्ड। ਹੁੰਦੀਆਂ क्या एक्स्ट्रा क्लासेस, दे आर मोर पर्सनलाइज्ड, ठीक है, एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक। किसਦੇ ਲਈ, फॉर द स्टूडेंट्स। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਸਿਲੇਬਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ ਉੱਥੇ, ठीक है, बीइंग अ टीचर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, क्योंकि मैं तो जो सिलेबस मिला स्कूल का मैंने उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। उन जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ you guys are studying English, ठीक है, तो इस अंदर मेरा IELTS था। उन IELTS नो अगर मैं करूं तो मैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पे फोकस करूं, मैं तो एसेस करूं। व्हाई शुड आई बी टीचिंग ग्रामर, गल समझ रहे हो, व्हाई शुड आई बी, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर ग्रामर ਤਾਂ नहीं पूछा रहा कुछ, तो एसेस आ रहा है, मैं तो उन्होंने एसेस कराई जाऊंगा, पर ग्रामर ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। तो वो हो गया थोड़ा पर्सनलाइज्ड थिंग, ठीक है ना। तो ऐसे इस अंदर थोड़ा ट्यूशन अंदर क्या है, तो पर्सनलाइज मतलब अगर किसी बच्चे को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसको अपने एविडेंस, अपना एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसको समझा सकता है। सो एक्स्ट्रा क्लासेस आर, हुन इथे आर के ਆਪਾਂ यूज कर रहे हैं कि वो चीज ਹੁੰਦੀ ही है, ठीक है, आर मोर पर्सनलाइज्ड एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक फॉर स्टूडेंट्स। टू बी प्रिसाइज मतलब टू बी स्पेसिफिक, ऐसे कैसे अपन उसको समझाना है, ठीक है। चिल्ड्रन, टू बी प्रिसाइज, चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू डिस्कस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस किस दे नाल, विद द टीचर, ठीक है, which is not possible in a formal class। क्यों, as the teacher is under the pressure of completing the syllabus। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, are more personalized and problem specific for the students। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਨ ਕਹਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਜੋ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰੀਡਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਈ, ਹਾਊ, व्हाट डज इट प्रोवाइड। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ, ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ they are more personalized and how they are problem specific for the students। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, this is because, ਠੀਕ ਹੈ, या to be precise, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ to be precise, to be specific। ਚਿਲड्रन ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਸ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ये अपना पॉइंट क्लियर हो गया। इस तो अलावा आ जाओ, व्हाट इज मोर, हुन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मोर, टीचर्स कैन गिव फुल अटेंशन इन वन टू वन सैशंस। टीचर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ वन टू वन ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। Obviously, being a teacher, that's the teacher's responsibility to cater each and every child present in the classroom, right? So teachers can give full attention in one-on-one sessions। होएगा क्या, ये हम grammatical structure लगाया आपा बजाय कि therefore as a result full stop तो बाद लिखन ली आपा सीधा comma लगा दो, verb दा थोड़ा ing लग जाएगा, ठीक है। होएगा क्या, gaining a piece of in-depth knowledge about the topics। Teachers can give full attention in one-on-one sessions, gaining a piece of in-depth knowledge about the topics। बच्चा नो in-depth knowledge मिल जाएगी of the topics। Clear? It is on, it also encourages, encourage भी करती है बच्चे नो किस लिए, to do group study। उन group study अगर encourage करता होंदा क्या है, what does it provide, ठीक है, which enhances their team spirit। बच्चा दी टीम स्पिरिट एनहांस कर दी है। मोरओवर सच सप्लीमेंट्री क्लासेस, हुन आपा पैराफ्रेज तक कर दे रही है, ठीक है, सच सप्लीमेंट्री क्लासेस कैन आल्सो हेल्प।
ਹੁਣ also ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ already ਉੱਪਰਲੇ points ਨਾਲ addition ਚੱਲ ਰਿਹਾ so can also help the students to revise what they have learned in schools अगर वो revise कर पाएंगे तब क्या होएगा as a result की बजाय फिर comma result verb ing gerund बना के resulting in improving and enhancing the knowledge of a student as they can get immediate solutions from the teacher which is not possible in self study a one example लिख दो as stated in Times magazine February 2021 edition dedicated to students current lives example ਦਾ ਵੀ ਹੈ बिल्कुल एग्जांपल किवें आ गई ए चीज ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਰ ਓਵਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ठीक है लास्ट पॉइंट जो आपको एग्जाम्पल बना के दोस्तों ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ such supplementary classes can also help the students ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਈਟ give examples from your own personal experience ਹੁਣ मैंने टाइम्स मैगजीन पढ़ी सी February 2021 एडिशन थी उस अंदर ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ supplementary classes ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ मैंने अंदर पढ़िया कि हाँ जी और रिवाइज ये ਜਿਹੜੀ क्लासेस है वो हेल्प करती है बच्चे ਨੂੰ रिवाइज ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ improving and enhancing the knowledge of a student as they can get immediate solutions ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ठीक है clear hai bp1 everybody Yes, sir. all right let's move to body paragraph 2 now on the contrary because the topic was asking us on the second side also or do you think the education in school is sufficient so we choose to write with the expression first on the contrary extra classes can be an unnecessary burden on children वो कैसे ठीक है तो हम तुसी obviously अगर क्वेश्चन पूछते हो अगर मैं कोई स्टेटमेंट दूं extra classes can be an unnecessary burden on children how sir how it could be a burden sure this is because so for how use this is because कोई comma नहीं इस तो बाद okay no punctuation so not every student requires every student ठीक है इस तो बाद हमेशा s और es थोड़ा लगेगा because every is denoting to single each and every okay so not every student requires extra attention आप paying attention दी गल कितनी सी bp1 yes ਹੁਣ आ गया गल जगन क्लियर हो गया कैसे प्रोग्रेशन लिंकिंग अप रहनी चाहिए दोनों bp switch right there has to be a linking between both the paragraphs now we spoke about that teachers can pay individual and full attention right in one-to-one sessions here this is because not every student requires extra attention when students now if they are pushed for tuition what would happen when students are forced to attend extra classes what would happen they become uncomfortable and lose their interest and attention in regular classes so students who are already excellent in terms of academics if they are being enforced to go and study in tuition classes which means that they may not pay full attention in the class in the regular class at school right what is more every student singular again is helping verb right so every student is unique and has different needs apart from academic for example it is irrefutable that extra classes will waste the time that can be utilized in games competitions or developing other important life skills right so this is why it is being said that not every time these classes are necessary is it clear right so conclusion restate your bp1 bp2 and give a suggestion so in conclusion
eighth one is linker. You have to write, okay, in conclusion, to conclude, to recapitulate, encapsulate, anything whichever you feel like, but do not write to sum up. Okay, that is informal. In conclusion, it is conspicuous. Conspicuous means it is vivid, means it is clear. It is clear based on the aforementioned. Aforementioned matlab ऊपर discuss की हुई, ठीक है? So it is clear, it is conspicuous based on the aforementioned discussion that extra classes are an effective approach to enhance students' academic performance. Right? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ comma ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Okay, so effective approach to enhance students' academic performance. However, parents should understand the needs of their children and focus on their overall development. This is your clear opinion. So parents should understand the needs of their children and focus on their overall development. Okay? These are parents' opinion. अपना opinion है. You are suggesting. Right? All right, that will be all.